Let us start the new topic, radioactivity, which is the very important portion of your modern physics. And after 19th century जितने भी हमारे पास जो रिसर्च हुए हैं उसको हम मॉडर्न फिजिक्स के अंदर रखते हैं। 1896 में फ्रेंच फिजिक्स एच बेक्वेरल ने रेडियोएक्टिविटी का आइडिया दिया था एंड इनके अकॉर्डिंग कहना था इनका कि रेडियोएक्टिविटी इज द स्पॉन्टेनियस न्यूक्लियर फेनोमेनन इन विच एन अनस्टेबल न्यूक्लियस लाइक आपका यूरेनियम 238 unstable nucleus undergoes a decay with the emission of some particles. That particle may be alpha or beta with some radiation, and that is gamma rays. There are mainly three types of your radioactive decay. एक alpha decay, second one is beta decay, and third one is gamma decay. In alpha decay, your helium nucleus, that means He42 with 2 electronic charge emit होते हैं. In beta decay, electron or positron with the same mass as electron are emitted. In gamma decay, this is the emission of with high energy, and that energy is approx 100 kilo electron volt. Photons are emitted. तो हम लोग देखते हैं इसमें स्टेप बाय स्टेप कि अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं and what are the properties of alpha particles. An alpha particle plus 2 each charge and mass equal to that of the proton. Mass 4 times, that means 4 times that of the hydrogen atom equal to the mass of helium nucleus. Some important properties of your alpha particles are deflected in electric and magnetic fields. The velocity of alpha particle varies from 0.01 to 0.1 times with the velocity of light. Alpha particles have low penetrating power which varies 8.6 centimeter for different radioactive element. Alpha particles have high ionization power. Their ionization power is 100 times greater than that of beta rays and approx 10,000 times greater than of your gamma rays. Alpha particle produce fluorescence in the substances like zinc sulfide. These are the analytical symbol of your alpha, beta and gamma particle. Beta particle has a charge of electron equal to electron and it is fast moving electron, not the orbit electron of the atom, but it is emitted from the nucleus. There are so many properties of the beta particle. Beta particle are also deflected in electric and magnetic field because this is charged particle. तो जो भी चार्ज पार्टिकल होते हैं वो या तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट होते हैं. तो हमने देखा कि अल्फा पार्टिकल में भी ये प्रॉपर्टी है कि वो डिफ्लेक्ट होगा इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड में, एंड बीटा पार्टिकल में भी ये प्रॉपर्टी है कि इट विल डिफ्लेक्ट इन इलेक्ट्रिक एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड. Next, the velocity of beta particle varies from 1% to 99% of the velocity of light. The velocity of beta particle is of the order of velocity of light, and its mass increases with increase in their velocity. Gamma rays are high energy electromagnetic radiation of nuclear origin, and it has very short wavelength, approx 0.01 angstrom. And it is about 1/100th part of the wavelength of X-rays. Radiation of gamma rays is under the nuclear property, and whereas X-rays are due to atomic property. And there are some basic properties of your gamma radiation. As gamma rays do not have any charge, so it will not deflected by electric and magnetic field. जबकि इन दोनों में क्या था, आपका चार्ज का वैल्यू था. इट इज चार्ज पार्टिकल. गामा न्यूट्रल पार्टिकल है, इसमें कोई डेविएशन नहीं होता है इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड में. गामा रेज हैव हाईएस्ट पेनिट्रेटिंग पावर मोर देन दैट ऑफ अल्फा एंड बीटा पार्टिकल, एंड दे कैन पास थ्रू 30 सेंटीमीटर, अप्रॉक्स 30 सेंटीमीटर. यू कैन इमेजिन 30 सेंटीमीटर थिक आपका स्टील
या आयरन हो तो उसको पेनिट्रेट कर सकता है. गामा रेज हैव least ionizing power as compared to the alpha and beta particle. Gamma rays produce fluorescence. They also affect photographic plate, and this is more than the capacity. Its capacity is more than of beta particle. Gamma rays have high energy and they can give rise to the phenomenon of pair production. When the photon of gamma rays strike on the nucleus of atom, its energy is converted into electron and positron. तो हम यहाँ बोल सकते हैं कि ये इस तरह से ब्रेक हो जाएगा. दिस इज E माइनस प्लस E प्लस. E माइनस इज दिस इज फोटोन, this is photon, and this is electron, and this is positron. Now laws of radioactive decay. Laws of radioactive decay. तो हमने देखा कि इन रेडियोएक्टिव डिके अनस्टेबल न्यूक्लियाई लाइक यूरेनियम 238 डिसइंटीग्रेट होकर अल्टीमेटली स्टेबल न्यूक्लियाई लाइक लेड में कन्वर्ट हो जाता है. तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि रदरफोर्ड एंड सॉडी मेड एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ द radioactive decay of various radioactive material and found that the decay of all radioactive material is governed by the some general law, and according to this law the rate of decay of radioactive atom at any instant is proportional to the number of atoms present at that instant. Let capital N be the number of atoms present in the radioactive substance at any instant t. Number of atoms present in radioactive substance at any instant t, and dn be the number of atoms, dn be the number of atoms disintegrate in time interval dt. Atoms disintegrate in time interval dt. मान लिया dt टाइम इंटरवल में dn एटॉमिक जो dn नंबर ऑफ एटम्स जो है वो डिसइंटीग्रेट हो जा रहा है. तो हम यहाँ रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन dn dt इज रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन. चूंकि ये क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है, इसलिए इसके रेट को हम माइनस लगाएंगे. तो माइनस dn dt is directly proportional to number of atom present at that instant. तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो क्या लिखेंगे, माइनस dn dt is equal to lambda times n. नाउ अप्लाई वेरिएबल सेपरेबल. तो वेरिएबल सेपरेबल लगाकर हम लिख सकते हैं इसको dn डिवाइडेड बाई n is equal to माइनस लैम्डा टाइम्स dt. नाउ इंटीग्रेट. अब इसको हम क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं. तो इंटीग्रेट करेंगे तो ये विल गेट लॉग, इसको n लिखेंगे और यहाँ बेस e है, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, माइनस लैम्डा t. ये हो गया आपके पास टाइम, एंड प्लस एनी कांस्टेंट, दिस इज c. नाउ c is here integration constant. c is equal to integration constant, you can write. Now to determine c we apply the initial condition. Suppose n naught atoms in the beginning. तो हम यहाँ लिख सकते हैं n naught के लिए क्या लिखेंगे, n equals n naught at t equals to 0. n is equal to n naught at t equals
0, दैट मीन्स इनिशियली शुरू में जो है आपके पास ये है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पुट करेंगे, तो t0 पुट करेंगे तो ये विल गेट n नॉट जो आएगा वो आपके पास लॉग, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, t0 पुट करेंगे तो ये खत्म हो गया, तो आपके पास रिजल्ट आया log e n नॉट is equal to c. This is the value of c. Now put the value of c. अब c को हम यहाँ क्या करेंगे, पुट करेंगे, तो आपके पास इक्वेशन आ जाएगा log n बेस e is equal to माइनस लैम्डा t प्लस log e n नॉट. दिस इज द रिजल्ट. ये आपके पास रिजल्ट आ गया log n बेस e and this is equal to minus lambda t and plus log n naught base e. ये हमारे पास जो एक्सप्रेशन था, यू कैन राइट, इसको शिफ्ट कर देते हैं इधर, तो दिस इज log n बेस e माइनस log n नॉट बेस e minus lambda times t, and here you know the property log a minus b is equal to log a by b, that means n by n naught is equal to minus lambda t, and इस log को हम कन्वर्ट कर सकते हैं in terms of exponent, तो एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करेंगे तो ये आपके पास e log हटेगा और ये रिप्लेस हो जाएगा अपने जगह पर, तो दिस इज e minus lambda t is equal to n by n naught, so n is equal to n naught e to the power माइनस लैम्डा t. तो ये लॉग को कन्वर्ट करने का आपके पास ये तरीका है, ए बी इज इक्वल टू सी, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, लॉग हटाएंगे तो इसको लिख सकते हैं ए सी इज इक्वल टू बी. यूजिंग दिस वे यू कैन कन्वर्ट लॉग इनटू एक्सपोनेंट. तो ये आपके पास रिजल्ट आ गया, एंड यू कैन ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन नंबर ऑफ अनडिकेड न्यूक्लियाई टू विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. तो हम नंबर ऑफ अनडिकेड न्यूक्लियाई विथ रिस्पेक्ट टू टाइम के साथ इसका ग्राफ भी प्लॉट कर सकते हैं. नंबर ऑफ अनडिकेड न्यूक्लियाई एंड दिस इज टाइम. तो एट t इक्वल्स टू 0 जो आपके पास t इक्वल्स टू 0 पे नंबर ऑफ न्यूक्लियाई जो है वो है n नॉट, और फिर उसके बाद ये इस तरह से इसी रेट से ये डिक्रीज कर रहा है, दिस इज n नॉट, फिर ये कुछ टाइम के बाद n नॉट बाई 2, तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन है n इज इक्वल टू n नॉट e टू द पावर माइनस लैम्डा t. t0 पुट करेंगे तो ये आपके पास इनिशियल आ जाएगा, उसके बाद n नॉट बाई t, तो n नॉट बाई 2 जब ये होगा तो उसको हाफ लाइफ बोलते हैं, जब ये इनिशियल अमाउंट का एग्जैक्टली हाफ हो जाए तो दिस इज कॉल्ड t हाफ, एंड t हाफ इज इक्वल टू हाफ life. You can say the decay of radioactive substance is exponential. This is exponential equation, and the decay is rapid in the beginning and the rate decreases exponentially. धीरे धीरे जैसे जैसे न्यूक्लियाई कम होते जाएगा रेट भी कम होते चला जाएगा. It means that radioactive substance will take infinite time in decaying completely. Putting t equals to 1 by lambda in equation you will get, this is here, n is equal to 0.368 n नॉट. जो आपके पास उस समय जो अमाउंट बचेगा वो इनिशियल वैल्यू का 0.368 टाइम्स बचेगा in radioactive material, and after a time interval equal to the reciprocal of decay constant the undecayed atoms are 36.8% of their initial number. That means you can say 1 by e times the initial number of atoms. Now decay constant. What is decay constant? The radioactive decay constant may be defined as the reciprocal of the time
during which the number of atoms in a radioactive substance reduces to 3.8% of their initial number. The decay rate R of the sample is the number of nuclei disintegrating per unit time. That means you can say R is equal to minus dn dt, and from this equation you can write R is equal to R naught e to the power minus lambda t, where जहाँ पर हम लिख सकते हैं R naught is equal to lambda n naught. This is n naught, and you can say this is equivalent to the law of radioactive decay. The decay rate of sample rather than the number of radioactive nuclei is more direct experimentally measurable quantity, and it is called activity. The SI unit of activity is becquerel. Becquerel, BECQUEREL. Becquerel. 1 becquerel is equal to 1 disintegration per second. 1 becquerel is equal to 1 disintegration per second. There is another unit of radioactivity called Curie. 1 Curie is equal to 3.7 into 10 to the power 10. 3.7 into 10 to the power 10 becquerel. 1 Curie is equal to 3.7 into 10 to the power 10 becquerel. And 1 becquerel is 1 disintegration per second. Your एक्टिविटी का यूनिट जो है वो क्या हो गया, becquerel है. क्यूरी के टर्म्स में भी लिख सकते हैं. What is half life in radioactive decay? Half life of radioactive element is defined as the time during which half number of atoms present initially in the sample of the element decay, or it is the time during which the number of atoms left undecayed in the sample is half the total number of atoms present initially in the sample. It is denoted by the symbol T 1 by 2. This is the symbol of half-life. Let your equation is n is equal to n naught e to the power minus lambda t. And here at half-life, n is equal to n naught by 2. That means you can write here n naught by 2 is equal to n naught e to the power minus lambda t. N naught cancel. That means you can write half is equal to e to the power minus lambda t. This is equal to 2 to the power minus 1 and e to the power minus lambda t. And t is your half-life time. Minus cancel. That means you can write e to the power minus lambda t by 2. Minus lambda, sorry. This is lambda by 2 is equal to 2. You can write. अब इसको हम क्या करते हैं, एक्सपोनेंट में चेंज कर सकते हैं. तो इसको लॉग में चेंज कर सकते हैं. यू कैन कन्वर्ट इट इनटू लॉग. तो लॉग में हम लिखेंगे इसको log 2 base e is equal to lambda t half. That means t half is equal to 1 by lambda into log 2 base e. From this expression you can write t half. That means half life is equal to log 2 base e by lambda, or you can convert it into base 10, and that is equal to log 2 base 10 into, and this value is 2.303. This is 2.303. अगर हम इसको base 10 में convert करेंगे तो you have to multiply with 2.303 and divided by lambda, and this value is equal to, ये जो वैल्यू होगा वो आपका लगभग log 2 का वैल्यू होता है 0.301.
This is 0.301 into 2.303 divided by lambda. Students, rest of the lecture will be in next video. Keep watching. Thank you.